we are telling the people of India that Congress party will not allow this autocratic and dictatorial attitude of the BJP government. If the BJP thinks that using the police, IT and ED, they will scare the people of India, they will muzzle the voices of opposition. So today's Congress-led protest shows that people of India are not afraid, and like the farmers who did not back down, the Congress party and its supporters will not back down under the autocracy of Prime Minister Modi. So will all the NC leaders now, will you all march towards the ED along with Rahul Gandhi? It is unfortunate to see the way the police have surrounded the AICC office as if we are some war zone. Nobody is allowed to enter. Not even members of the media fraternity are allowed to enter. This shows that Prime Minister Modi is afraid of the show of strength that the Congress party and its supporters are planning. All the top leaders are here. And Piyush, if you can hear me, we just heard several reactions that are pouring in from the Congress party claiming that this is the central government. But, you know, let's take a step back as we track that protest that has broken out across the country. And if you could tell our viewers what really is expected with Rahul Gandhi coming to the ED office today and the investigation that... पूरी दिल्ली की नाकेबंदी कर दी गई जो पूरी तरह से अनुचित है। इस तरह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कांग्रेस के लोग करना चाहे तो उन्हें कर देना चाहिए। एक तो कोई केस में दम नहीं, बिला वजह का केस बनाया गया गांधी परिवार को फंसाने के लिए। उसके बावजूद जो है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इससे ज्यादा गलत बात कोई लोकतंत्र में हो नहीं सकती। इसलिए गलत बात सवाल पूछ रही है कि अगर राहुल गांधी इतने ही साफ सुथरे हैं तो ईडी के सवालों से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ईडी के सवाल से कोई नहीं पूछ रहा, ईडी में तो जा रहे हैं। ये तो उसके बाहर जो है प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भाई आप गलत काम कर रहे हो। अपनी बात कहने का तो हक है ना, तो भी नहीं कहने दे रहे हैं। सर बीजेपी ये भी कह रही है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एसआईटी ने उनको सवाल अकेले पेश होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल टेंट्रम नहीं खड़ा। देखिए उस समय भी भाजपा के लोगों ने खूब वहां पे प्रदर्शन किया था। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਆਫ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ। Sir. So we are continuously seeing these Congress leaders who are present there outside the Congress headquarters. In fact, they are saying that today they are all set to take out the protest march from Congress headquarters to ED headquarters. I am right now here at ED office where massive barricading has been done. Section 144 has now been put in place by the police personnel. Every person who is passing through these barricades, their ID cards are being checked and then only they are being allowed to move towards the ED office. I would ask Vivek to zoom and try to show a few more pictures from here. Remember that's the first layer of barricading, and if we can zoom the red wall, I would ask Vivek to come here and then we'll show more pictures. The red wall on which he is focusing, that's the entrance to the ED office, and there also you can see how there is a police presence, massive police presence. So 3 to 4 layers of barricading we can see from the entry point to the exit point, and this entire road, APJ Abdul Kalam road. सदन में, अदालत में, सब जगह लड़ेंगे। आज एक तरह से जो एजेंसी के सामने राहुल गांधी पेश हो रहे हैं, आप लोग लगातार उसका विरोध करते रहे कि काफी पुराना केस है, लगता है कि ये जो केस है ही नहीं, कहाँ केस है? कोई एफआईआर है क्या? ये ईडी केस तो मोदी सरकार ने 2014 में चालू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले उसे समाप्त कर दिया।
Raj is here. Udit Raj is here. You can see Udit Raj, Congress leader Udit Raj has also reached here. We are seeing on the other side massive protest is underway. Sir, what are your demands? Why are you here, sir? देखिए ऐसा है कि हम इधर आओ उदित राज जिंदाबाद। देखिए ऐसा है कि कोई गलती नहीं हुई है, पहले से ही मामला रफा दफा हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है। हम लोग सत्याग्रही हैं, हम अपने नेता के साथ में हैं। सरकार डर गई है, सरकार मुझे क्यों रोक रही है? हम आईसीसी ऑफिस जा रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग वहां पर सत्याग्रह करेंगे। सरकार डर गई है और उसमें कोई फाइनेंशियल डील, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूरे दिल्ली में चारों तरफ से घूमते अपने कार्यकर्ताओं से मैं मिलते आ रहा हूँ। कहा जा रहा है खाली पूछताछ है, पूछताछ के लिए इतना शक्ति प्रदर्शन किस लिए? क्यों पूछताछ होना चाहिए? जब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद में मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा, मैं जानता हूँ। सामना करने में किस बात का परहेज? अगर सत्य का सामना सरकार नहीं कर रही है, पूछताछ नहीं हो रही है, सरकार डर रही है। हमें जाने दे, सत्याग्रह पूछताछ नहीं होनी चाहिए, इस पे जमानत नहीं होनी चाहिए। आप गलत फंसा रहे हैं, आप गलत फंसा रहे हैं। उसमें एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो पहले से बनी हुई कंपनी थी और जिसके तहत नेशनल हेराल्ड और कौमी एकता और नवज्योति ये तीनों अखबार चलते थे, जब उसका लॉस में पूरा चला गया तो कांग्रेस का पार्टी का फंड है। कांग्रेस अपने पार्टी अपने अखबार को जीवित करने के लिए, जिसकी स्थापना नेहरू जी ने किया है, उसको जीवित करने के लिए क्या वो अपना पैसा डोनेट नहीं कर सकती? इसमें कौन सा फाइनेंशियल डील है? आप इनकम टैक्स में रहे हैं, इनकम टैक्स की रिपोर्ट पे ही इनकम टैक्स ये तो सरकार के हाथ में है, जो भी चाहे। आज तो एक सब्जी वाला भी क्यों ना हो और एक खीरा बेचने वाला, धनिया पाउडर बेचने वाला या मिर्च बेचने वाला, जूता साफ करने वाले को भी ईडी का नोटिस दिया जा सकता है। क्या करेंगे आप लोग? हमें कहाँ डर है इस बात का? सत्याग्रहियों हम लोग तो अंग्रेजों के खिलाफ में कुर्बानियां दिया है, तो हमें कहाँ इस बात का डर है कि पुलिस डिटेन जो कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, अब क्या है आगे? क्यों कर रही है? डरी हुई है मोदी सरकार, डरी हुई है। We are seeing Udit Raj, a senior Congress leader who has come here. Remember that he, along with scores of Congress workers, they have come here to protest. Right behind me, we are also seeing the sloganeering which is underway. Udit Raj, along with other Congress leaders, they have reached here. So the police is now making it very clear to all these Congress workers that they are not allowed to move beyond this very particular point. बार करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी। बिना केस के, बिना 1 रुपए के लेन देन के आप ईडी का समन भिजवा रहे हैं। 60 साल में आप ईडी का तड़का लगवा रहे हैं। 7 साल से केस बंद हुआ है, उसको दोबारा रीओपन करवा रहे हैं। तो ये प्रश्न आप लोग उनसे कीजिए, ना कि हम लोग। क्या कांग्रेस झुकेगी? लास्ट क्वेश्चन, क्या कांग्रेस झुकेगी? क्या कांग्रेस झुकेगी बीजेपी के सामने? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के झुकने की बात नहीं है। क्या देश नफरत फैलाने वालों के सामने झुकेगा या भारत जोड़ो के साथ रहेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता रंजना चौधरी। ये बताइए, जिस तरीके से जाना हुआ तो खड़ा हो गया। So it was Ranjita Ranjan who just spoke to my colleague Piyush Ori right there in front of Congress headquarters. I'm here at Enforcement Directorate office where massive deployment of police personnel has been done. You can see right behind me, Congress workers have come here who are being led by Udit Raj, and they want to go beyond this first layer of barricading because they are here to protest against the kind of questioning which is also to be done with Rahul Gandhi. Remember that today he has been summoned by the Enforcement Directorate office. Right behind me, we can also see these pictures coming in where one more bus has been called in a couple of minutes back. We saw another bus which was parked here, and in that particular bus we saw all these workers who came here to protest. They were detained. So any minute from now we can expect actions here outside ED office at the first layer of barricading, and these workers now they are being detained.
detained. We are seeing the pictures of these Congress workers who are now being detained. In fact, they are being asked by the Delhi police officers to go inside the bus which has just been called in, because nobody is allowed to stand here. No Congress worker is allowed to stand here to protest, to raise the voice. We are here right outside the ED office where massive action is underway. And remember, there at Congress office also there is massive congregation of the Congress party leaders. So here this bus has been called in, and in this particular bus all these workers would be sent. And now we are seeing that these workers are being detained. Here there are multiple barricading has also been done, and it has been told to all the workers that section 144 is in place and they are not allowed to congregate here. Remember that any minute from now Rahul Gandhi is also set to leave from his residence where he is expected to reach here at ED headquarters. And here we can see the Congress workers who are now being detained. They are now being taken inside this very bus, and they will be taken to a nearby police station. Also on the other side there is one more bus which has been called in. I would ask Vivek to continue to come here, and then we'll try to show you more pictures. There is one more bus which has been called in, and this entire road has been completely barricaded, blocked. Nobody is allowed to move beyond this particular point. Rahul Gandhi Zindabad are the slogans. Those are also being raised here by the Congress party workers. You can see how they are now being detained. Today is a big day for the Congress party. Massive protests are planned not only in national capital but across the country. If you talk about this entire case, remember that this case pertains to 2012 when Subramanian Swamy had filed a PIL, and after that we saw as to how multiple things came out. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, they were also summoned by Patiala House Court. In fact, after listening to all the pleas, High Court had also asked the Congress party National Herald to AGL, in fact, to vacate the building of National Herald. So since then there are serious allegations on Sonia Gandhi and Rahul Gandhi of doing corruption at the tune of 90 crore rupees, and after that maintaining that this. Well, any moment from now, this is going to be the movement from Rahul Gandhi's residence. We are giving you the live visuals from right outside Rahul Gandhi's residence. Any moment from now, as the alertness could be clearly seen, the security is on alert. The security has been beefed up. The people are not allowed here to come, and for any kind of protest, the permission has been already denied. We are getting visuals from Enforcement Directorate Office. We are getting visuals from AICC headquarters, and we are seeing how the protesters, how the Congress workers, the Netas has reached over there. Let me give you the sense of the security also, which has been tightened right outside the Rahul Gandhi's residence. So these are the police personnel, Delhi police personnel who are here so that no miscreancy should happen. But there, तो सुना आपने, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सांसद जिनको देखिए इस वक्त बसेस में भर के ले जाया जा रहा है। इससे पहले तमाम वो महिला कार्यकर्ता जिनको डिटेन किया गया था, क्योंकि देखिए ईडी दफ्तर के बाहर भी एक एक कर जो तमाम कार्यकर्ता है वो इसी तरह से पूरे ग्रुप बनाकर यहाँ पर पहुंच रहे। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से लगातार नारे। Detained here by the police officers. We can see Udit Raj, senior Congress leader, is now being detained. He, along with other Congress party workers, have now been detained. In fact, he had come here to protest along with scores of Congress party workers, but he, along with other workers, have now been detained. Massive drama can be seen right outside the ED office. Delhi police had made it very clear to all the protesters, to all the leaders, that section 144 is in place and they are not allowed to protest here. But Udit Raj, along with other workers of Congress party, reached here and they started protesting. Now we are showing you the pictures of these Congress leaders along with the workers who have reached here. They are now being detained. In fact, they wanted to protest. Udit Raj has just been detained. He has been sent inside this bus, and from here he will be taken to a nearby police station. Delhi police is now ensuring that no protest takes place, and that is why section 144 is also in place. Let's try to get in a word from these workers who have come here, who have just been detained. क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग यह है कि जो देश के हित में बोलेगा उसे सीबीआई और ईडी से डराया जाएगा। ये निकम्मी सरकार है, ये मनुवादियों की सरकार है।
बैठने दो। We can see Uditraj, who has just been detained here. In fact, he is now being taken inside this bus. He is saying that he was here to protest against the Rahul Gandhi being called for. ये हमें इस तरह से पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, पुलिस में हमें हिरासत में लिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। Has now been detained. He is now being taken. More workers of Congress Party are being detained. They were also here. Now women Congress workers are being detained. They have come. मैम कहाँ से आए आप? खजूरी से। किस लिए आए थे यहाँ पे? कहाँ से आए आप? खजूरी भोजनपुरा। किस लिए आए थे? हमने हमारी काम सुनते नहीं है, महंगे का सामान है, हमारा घर कहाँ से चले, बच्चे कैसे पाले। तो यहाँ पे धरना किस लिए? राहुल गांधी के लिए कि किसके लिए? क्या राहुल गांधी को क्या हुआ? उनको मिलना है हमें। राहुल गांधी तो यहाँ वहाँ दूसरी तरफ से आएंगे। अच्छा आएंगे तो देखेंगे। लेकिन आपको क्या बताया, किस लिए बुलाया गया? क्यों बुलाया गया मैडम? क्यों बुलाया गया आपको? क्या बोला गया? मैडम आपको क्यों बुलाया गया? बताया कुछ? क्यों बुलाया? नहीं बताया? आंटी बताया कुछ? पता है ना, हम अभी पता कर रहे हो। पता कर रहे हो? These are the few workers who don't even know as to why they have come here. So we can clearly see as to how there are leaders who come here to protest, and now the workers whom they call workers, they have come here and they don't even know the reason as to why they have come here and the point on which they are protesting here. पकड़ लिया, मुझे गिरा दिया, ये हालत है, ये जनतंत्र की हत्या है, इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना उदित राज को कि एक शब्द ऐसा नहीं बोला गया या कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। फिर आखिर क्यों ये जो डिटेन किया गया है, जो आखिर ये डिटेन किया गया है, ये आखिर क्यों किया गया है? कॉमन बाइट मिल जाती है, इसमें घुसने नहीं देते। Yes, we just saw Congress workers who have just been detained. There is one more bus in which we can see few more Congress workers who are now being detained. Rahul Gandhi has just been detained. There are some Congress workers who are being detained and they don't even know why they were called here, because leaders come here and they don't tell to people the reason as to why they want to go for protest. We just saw few workers who don't even know the reason as to why they have come here. But yes, Udit Raj along with other Congress workers, they have just been detained by the Delhi police officials. Because of this protest, traffic is also getting disturbed. The people are facing a lot of problem here on the streets of Delhi. Let's go on the other side and show you more pictures. Remember that this is the entry point towards the APJ Abdul Kalam Road, and this road has been completely barricaded, completely blocked. Senior police officers are on the roads. At one side we are seeing the road is closed. On the other side, the Congress party workers continue to protest. After this very short break, we'll get more and more details, more and more pictures as Congress party continues to protest on the streets of national capital, and Rahul Gandhi is all set to leave from his residence. Stay tuned. And there you had it, our correspondent Piyush on the ground, keeping us ahead on what's really happening with respect to the protest of the Congress party there, with respect to the National Herald case in which Rahul Gandhi has been called to the Enforcement Directorate office. And while he goes there today, we see that the kind of satyagrah that had been warned by the Congress party is being organized, and in the middle of the protest, all the Congress party leaders, members being detained by the police. And we have seen how the entire development had also taken place. आज अन्याय से लड़ने के लिए कांग्रेस आपको क्यों बीजेपी कह रही है कि एजेंसीज का काम नहीं करने दे रही है, कांग्रेस जानबूझ के अब थोड़ा पैदा कर। जब आप घोषणाओं का उपयोग जो है उनकी आवाज बंद करने के लिए करेंगे, अन्यायपूर्ण घोषणाओं के आप कानून का दुरुपयोग करने के लिए करेंगे,
चल रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि यदि इससे कानून का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दुरुपयोग। मेरे साथ हरीश रावत है,